we have learned how to do subtraction, but how do we check that our answer is correct? For that we have to learn something which is called the digit roots. Digit roots or digital roots or sum roots, this is the different names for the same thing. For this, what do we do? Suppose we have a number 721. Okay, so we add all the digits. 7 plus 2 is 9, 9 plus 1 is 10. Again there are two digits, so we add. 10 plus 1 is 1 plus 0 is 1. So the digit root of 721 is 1. Let us take more example. 3, 2, 4. Okay, what do we do is 3 plus 2 is 5, 5 plus 4 is 9. Okay, now let us take one more example. One more method we can do is, since digital roots is the sum of 9s, we add. So 6 and 3 become 9, 7 and 2 also become 9. So what numbers are left? 1 and 1 is 2, right? We can find out this way also. Let us try the other way by adding all of them. 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 7 is 19, 19 plus 1 is 20. So we get 20. Now 2 plus 0 is also 2. So it is the same thing, right? This is how we find out the digital roots. Now let us see how to use the digital roots in subtraction. What can be done? Okay, 724 minus 165. First let us subtract this. We do complements here because this number is smaller. So 5 minus 4 is 1. 1's complement from 10 is 9. Again second will be from 9 because last from 10 all from 9. So 6 minus 2 is 4. 4 complement from 9 is 5. 7 minus 1 is 6 and we subtract 1 extra for complement. So we get 5. Okay. Now how to check that our answer is correct? We find the digit root of this. 7 plus 2 9. 9 plus 4 is 13. So 1 and 3 13. So 3 plus 1 is 4. Okay. What is the digit root of this? 6 plus 1 7. 7 plus 5 is 12. 12 is 2. 12. So this becomes 2 plus 1 is 3. Now what is the digit root of this? 5 plus 5 10 plus 1 9 19. So digit root is 10 and that makes it 1. So what do? Whatever we have done here subtraction, we do the same subtraction for the digit root also or the digital roots also. So digital root for the first number is 4. The second number is 3. So minus 3. What do we get? 1. Are we getting the answer as 1? The digit root of the answer 1. Then our sum is correct. So that is how we check that our answer is correct. Let us do one more sum using the Vedic method subtraction and also check how is the sum correct by using the digital roots. Okay, if you see the first number is smaller, so we start with complements. 9 minus 5 is 4. 4's complement from 10 will be 6. 6. Now this number is bigger, so no need of complement, so we come out of complement. We can come out of complements anytime, whether it is in the first one, after the first one or after doing 2-3 steps also. Whenever the upper number is smaller, bigger, we have to come out of complement. मतलब ऊपर का नंबर जिस भी जगह हमारा बड़ा आ जाता है वहीं पर हमें उसमें कॉम्प्लीमेंट में से बाहर निकालना है. चाहे तो खाली डिजिट हमने कॉम्प्लीमेंट 10 में से ही लिया हो या 10 और 9 में से भी लिया हो, जब हमारा नंबर बड़ा आ गया हमें बाहर निकालना होगा. ठीक है, तो 6 माइनस 3 3. एक कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 2. अब हमने यहाँ पे क्या देखा, फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये ऊपर का नंबर फिर से छोटा हो गया. तो 7 माइनस 4 इज 3. 3 का कॉम्प्लीमेंट 10 में से आ गया हमारा 7. अब ये नंबर फिर से छोटा है तो यहाँ पे हम
कॉम्प्लीमेंट लेंगे, किसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 9 में से लेंगे। सो 4 माइनस 3 इज 1, 1 कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 9 इज 8। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर बड़ा है हम कॉम्प्लीमेंट में से बाहर निकलेंगे। सो 1 माइनस 0 इज 1, उसका भी 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब फिर से देखा हमारा ये नंबर छोटा हो गया नीचे वाले से, तो अगेन वी हैव टू डू कॉम्प्लीमेंट। सो 7 माइनस 2 इज 5, 5 कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम 5 इज 5, 5 complement from 10 is 5. Now we come out of complement because again this number has become bigger. So 7 minus 1 is 6, minus 1 is 5. So now let us check that if our answer is correct or wrong. So उसके लिए हम क्या करेंगे, we find the digital roots. Of the digital roots of the sum we do is we either add all the digits, सब numbers को हम add करके एक single digit बना लेंगे, या जो दो numbers हमारे 9 add हो रहे हैं उनको हम cancel out कर देंगे. So what all numbers are adding to 9? 7 plus 2 is 9, 3 plus 6 is 9, 5 plus 4 is 9. So this is 1. Now here only this number is 9. No other numbers are adding to 9. So let us add all of them. 1 plus 7 8, 8 plus 4 12, 12 plus 7 19, 19 plus 3 is 22. So 22 का 2 और 2 ऐड किया तो हमारा डिजिट रूट हो गया 4. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन कौन से, सिर्फ 7 और 2 हमारे 9 बन रहे, बाकी कोई नंबर्स ऐड होके 9 नहीं बन रहे, तो हम सबको ऐड कर लेते हैं. 5 plus 5 10, plus 8 18, plus 6 24. तो 24 का हो गया, 2 plus 4 हो गया 6. ठीक है, अब कैसे ये 1 minus 4 6 कैसे आएगा, तो उसका भी एक तरीका है जो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. 1 minus 4 is equal to क्या 1 माइनस आया, -3 आया. अब -3 कैसे हो गया, क्योंकि हमारा 9 बेस रहता है इन सब में, तो 9 minus 3 is equal to 6. Are we getting 6 as the answer? Yes, we are getting 6 as the answer. So our answer is correct.